Hey guys, Assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. आज है 8th April I think, and I don't even know what roza we are on, but we are almost halfway done. मैं रमज़ान vlog stop कर दी थी because मेरा बहुत सारा काम बैकलॉग पे था, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली कल मेरी फ़र्स्ट रमज़ान अपलोड होने वाली थी, बट आई बिकेम सो बिज़ी बिकॉज इफ्तियार के टाइम पे आई जनरली अपलोड, तो वो टाइम पे मैं खाना बना रही होती हूँ एंड इट जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड. अपलोडेड थी, जस्ट उसको पब्लिक करना था एंड मैं कर नहीं पाई, बट इंशाल्लाह आज करूँगी. टुडे इज़ अ सैटरडे, सो आज मैं करूँगी एंड आई एम ब्रेकिंग आउट ओवर हियर बिकॉज मैं बहुत कचर पचर खा रही हूँ. दर इज़ नो कंट्रोल बिकॉज ऑफ रमदान. एंड अभी सुबह की सैरी कर ली है, अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, वरना मैं पूरा दिन यही सोचती रहूँगी कि स्टार्ट करना है और मैं स्टार्ट नहीं करूँगी. तो इसलिए एटलीस्ट व्हेन आई स्टार्ट आई नो आई विल कंटिन्यू एंड मेक समथिंग और दी अदर. कल की जो इफ्तियारी थी आई वॉन्टेड टू एक्चुअली शूट दैट. कल मेरी पहली इफ्तियारी थी बिकॉज आई हैड गॉट पीरियड्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड कल मैं रोज़ा रखना शुरू कर दी हूँ. तो आज मेरा सेकेंड डे है बैंगलोर में, नॉट इन द एंटायर रमज़ान बट बैंगलोर में मेरा सेकेंड रोज़ा है. अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम माई पीरियड्स वर रियली काइंड इनफ एंड गॉट ओवर इन 7 days एनी विच वेज. अभी मैं सहरी करने जा रही हूँ, अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ एंड आप लोगों से मिलती हूँ इन फ्यू मिनट्स एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम अप टू. सो गिव मी 5 minutes एंड आई विल बी बैक. ओके गाइज, नमाज हो गई है एंड अभी मैं ये रूम को टैकल कर रही हूँ. एक्चुअली आई वांट टू गो एंड स्लीप, बट मैं थोड़ा रात भर सो गई थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको टैकल कर रही हूँ. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेस है, इसको मैं टैकल कर रही हूँ. तो मैं मैसोर में जब थी 2 weeks, माई हस्बैंड वॉज हियर एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ मेस ही क्रिएटेड. प्लस मैं थोड़े बैग लेके आई तो और भी ज़्यादा मेस बढ़ गया. एंड होता क्या था कि मैं सोचती कि बाद में करूँगी, फिर जैसे सुबह मेड आ जाती है, फिर मेड के पीछे पीछे काम में बिज़ी हो जाती हूँ. फिर जैसे वो जाती है देन आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ स्लीप एंड देन व्हेन आई वेक अप आई एम सो ग्रॉक्ड अप एंड आई एम सो टायर्ड. फिर रमज़ान के रोज़े की तैयारी में लग जाती हूँ एंड देन इफ्तियार के बाद बैटरी पूरी डाउन हो जाती है. तो इसीलिए आई हैव couple of gifts from Adidas that my husband gave to me on my birthday. I wanted to film my birthday video, but I didn't because I wanted to also live in the moment. So there are some stuff that I have to share it with you guys. Inshallah, I'll see if I can do it today or otherwise in the next vlog. And then I also purchased certain things and stitched 2 dresses this time for Ramadan, so I want to show you that as well. And then there are certain clothes of my husband which has come from Mysore, washed and everything. So mostly it's his clothes that I'm trying to sort and organize, combined with a tiny bit of my clothes. So then I have also kept this blanket which has to go for dry cleaners, and this room is full of his stuff, his biking stuff. There's my ring light which I got it back from Mysore. So there is a lot of things to do. अभी कल रात में मैं बैठ के मेरा पूरा अलमार सॉर्ट आउट की बिकॉज मैसूर बैंगलोर हो रहा था, तो एवरी थिंग वॉज लाइक chaotic इन माई अलमीरा एज वेल. तो वो थोड़ा सॉर्ट किया मैंने. मीशो से मेरे थोड़ी चीज़ें आई हैं, मैं वो भी दिखाना है. आई डोंट नो कब कैसे होगा, बट इंशाल्लाह वी विल डू इट. तो या फर्स्ट लेट मी जस्ट टैकल दिस. अभी मैं अलमार में रख देती, बट माई हस्बैंड स्लीपिंग एंड टुडे इज़ अ वीकेंड, सो I'd rather not disturb my husband. So I'll sort everything, सब एक तरफ रख दूँगी ताकि इतना क्लटर्ड ना लगे. एंड फिर जैसे वो सुबह में देखते हैं कैसा होगा क्या होगा. बट या दैट्स द प्लान, दैट्स द अपडेट. और लेट मी जस्ट फ्लिप द कैमरा एंड शो यू अ बेटर व्यू ऑफ व्हाट आई एम डीलिंग विद. Alright, as I said, clothes from Mysore, mostly his clothes. This has to go to wash. Look at how dirty it has become. It has to go for dry cleaners. So this is his whole clothes situation. These are gifts that I got on my birthday. These are some new clothes and these 2 are stitched. That's my laptop bag, again his clothes and some of my hygiene stuff, his biking gear stuff. I don't know where I have to keep these. His clothes, that's from Misho. His biking gear, my ring light,
a video that I need to make his shoes, his things, and his things and his things. So yeah, I've just started doing it while I just forgot that I was not filming. Then I started filming right now, so I just have started folding all the clothes like how I typically do. And you can see the sun is coming up. Look at those purple beautiful flowers. Those are actually wildflowers. So yeah, they're coming in. And yeah, I watered the plants, did all of that since 3 o'clock. I've been hustling. I will show you the sunrise when it happens, but you can get a sneak peek of it. The purple hues are looking so spectacular, except for the clothes. But okay you guys, almost done. तो मेरी लैपटॉप बैग पीछे रख दी है, जो वीडियो में दिखानी है वो वाले पीछे रख दिए हैं. जानमाज है, शूज़ हैं जो वो रूम में चले जाएंगे. सिर्फ मेरे शूज़ हैं, आई थिंक मेरे हस्बैंड के भी एक दो होंगे, बट उनके इस बेड के अंदर जाएंगे, मेरे उस बेड के अंदर. और ये सारे उनके कपड़े हैं. एंड ये जो फाइल दिख रहा है छोटू सा, ये मेरा फाइल है. एंड एक्चुअली दिस इज़ लुकिंग बिग बिकॉज 2 अबायाज हैं और मेरी हैंड बैग है जो कि वो रूम में चली जाएगी. एंड फिर वॉश के कपड़े हैं और फिर एक रैंडम सा बैग मिला है और एक मीशो का बैग जो कि मैं डस्टबिन में डाल दूँगी. बाकी का सुबह में देखते हैं, जो भी होगा जब भी होगा. बट इसका वीडियो मैं आज बना दूँगी. पीछे वाले जो बैग्स हैं वो बना के मैं अंदर ठिकाने पे डाल दूँगी. I will go and sort that a little bit and then I'm done. But let me just show you this. Look at this. So pretty. So goddamn pretty. Love it. The sunrise. I was telling my husband, okay, I was telling him कि सारे आपके कपड़े हैं, please let's keep them, but he was insistent कि नहीं सारे तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हें रखने हैं. And lo and behold, look at that, all of him, it is his कपड़ा. And men will be men. Okay, anyway choice, at least bed तो दिख रहा है. इसकी बेडशीट भी मैं चेंज कर दूँगी इंशाल्लाह. By evening I will do it, I hope so. And this I will keep it inside before they fall off. And again, I don't want to fold again. I hate folding and I did fold again. This is the second time or third time I'm folding these clothes. But today will be the day they go inside. And hopefully I'll fold these ones when they dry out. And then there'll be no clothes. I hate clothes being everywhere. It just irks me a lot. Anyway, I will catch up with you guys in evening, I suppose, and I'm just going to enjoy nature for a few minutes before the traffic goes really bad. As you heard tiny tidbits, it's very beautiful to hear this noise. It's not noise, it's this pleasant sound. Okay, I'll catch up with you guys in a minute. Okay, I changed my outfit and also I'm having a teeny tiny migraine, I suppose. I should have had a tablet and not been so so much takhatwar. Shouldn't have thought that I can make it through the day, but now my head is aching. Guess where the chole are? उसके बाद हम लोग गए कमर्शियल स्ट्रीट और ये वाले थोड़े आउटफिट्स ले आए थे, मतलब ड्रेस मटेरियल्स थी. दीज आर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर रमदान. ये मेरा वाला है. मैं ये सोच रही थी लैलतुल क़द्र के दिन पहनूंगी, बट स्टिच हुआ ही नहीं. एंड अगेन ऑल ऑफ दीज आर फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स. बहुत अच्छे प्राइजेज़ में हमें अच्छी क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल्स मिल गए थे जैसे हमें चाहिए थे, विद गुड बिग दुपट्टाज एंड ऑल ऑफ दैट.
सो आई रियली लाइक देम, सो आई थॉट आई विल शो इट टू यू गाइज. जो वहाँ का व्यू था, नज़ारा था कमर्शियल स्ट्रीट का, मैंने उसको शॉर्ट्स में, रील्स में डाल दिया होगा. अब तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी. ये एक और मेरा वाला था जो कि टेलर ने सिल के नहीं दिया अभी तक, बट सारे मेरे चॉइस थे. आप कैसे बताना. तो कल का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया, बट आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ. हम लोग फिर से मैसूर जा रहे हैं क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की जो बड़ी सिस्टर है उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है. एंड टुमारो इज़ हर, आई मीन टुडे इज़ हर सर्जरी इन द आफ्टरनून. इट्स एन इमरजेंसी सर्जरी, सो वी पैक अ बैग्स एंड एवरीथिंग. तो कल रात को ही हमें पता चल गया था, इसीलिए वी वेंट फॉर शॉपिंग, बिकॉज ईद की शॉपिंग करवानी थी सबके लिए. तो हमें पता नहीं था कि हम वापस आएंगे, कब आएंगे, क्या होगा, किधर होगा. तो हमने सारी शॉपिंग कर ली, पैकिंग कर ली, सब सामान नीचे चला गया है. अभी सहरी का टाइम है 4 o'clock. जल्दी में मैंने मैगी बनाया थोड़ा सा. लेट मी जस्ट टर्न द कैमरा. So I made some Maggi, I made eggs and sausages and some corn. So this is going to be our sahri, and I have to clean up the kitchen again. And yeah, pretty much that's all that's happening. Like cleaned up this whole area. Actually my husband did it. So this area is all cleaned up. All the bags are good to go. Everything is done. Only have to comb my hair a bit and wear shoes and just leave. I'm super tired क्योंकि हम आए थे घर पे अराउंड 1:30 एंड फिर पैकिंग सब कुछ की, बिकॉज यहाँ के मार्केट्स अभी रमदान में ना अराउंड 2:33 तक भी ओपन रहते हैं. तो दैट्स वाई वी वेंट एंड वी शॉप्ड इन द इवनिंग. And you guys have already seen that, so why am I telling it again? I have no clue. I have to apply cream also. So all of this is happening. I will have my sahri, catch up with you guys in a minute. ओके, मैंने शॉर्ट्स के लिए वाला क्लिप लिया था तो मैं यहीं पे ऐड कर रही हूँ. सरप्राइजिंगली द वेदर वाज रियली प्लेजेंट एंड वेरी काइंड टू अस. तो हम लोग मैसूर पहुँच के कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किए बिकॉज बहुत बिजी हो गए थे. सो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. बाय.